Now we are talking about digital libraries. It is very important for KVS, NVS, DSSSB, Rajasthan, Bihar Digital Librarian. So let's start. The idea of easy fingertip access to information, what we conceptualize as digital library today has its origin in Werner Bush Mamax machine and has continued to evolve with each advance in information technology. When computers were connected into large networks forming the internet, the concept evolved again and research turned to creating libraries of digital information that could be accessed by one from anywhere in the world. The fundamental reasons for building digital libraries is a belief that they will provide better delivery of information than was possible in past and traditional libraries. Therefore, डिजिटल लाइब्रेरी का अर्थ है जो 0101 बाइनरी सिस्टम पे काम करे और जो कंप्यूटराइज्ड हो और ये काफ़ी इजी है. फ्रेजेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, library without walls, and digital libraries have sprung up and all have been used interchangeably describe the board concept. इसको हम इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी बोलते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी बोलते हैं, लाइब्रेरी विदाउट बोर्ड और डिजिटल में इंटरनेट यूज़ होता है. बट व्हाट डज दिस फ्रेज मीन? व्हाट इज़ डिजिटल लाइब्रेरी? इसका मतलब क्या है कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या है एंड व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस इन क्रिएटिंग डिजिटल लाइब्रेरीज. और डिजिटल लाइब्रेरी को बनाने के लिए क्या क्या इशू और क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं वो भी देखने वाली बात होती है. Also, what are the issues involved in creating coordinated scheme of digital libraries? This section is intended to provide overview of digital libraries and briefly discuss answers to some of the above question. चलो देखते हैं कि क्या क्या होता है. पहले बात करते हैं डेफिनेशन क्या होता है. What is digital library? There is much confusion surrounding the phrase digital library arising out of three factors. First, the library community has used several different phrases over the years to denote this concept: electronic library, virtual library, library without walls, and it never was quite clear what each of these different phrases mean. Digital library is simply the most widely accepted term and now is used exclusively as conferences online and literature. तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी कहते हैं. वर्चुअल लाइब्रेरी आजकल ये काफ़ी यूज़ होती है, चाहे वो पॉलिटिकल कन्फ्रेंसेस हो या वैसे कन्फ्रेंस हो, ऑनलाइन लिटरेचर हो या कुछ भी हो, तो इसमें काफ़ी इसका यूज़ होता है. द सेकेंड फैक्टर एडिंग टू द कन्फ्यूजन इज़ दैट डिजिटल लाइब्रेरीज are at the focal point of many areas of research and what consists a digital library different depending on the research community that is describing it. For example, from an information retrieval point of view, it is a large database. For people who work on hypertext technology, it is a particular application of hypertext methods. For those working in wide areas information delivery, it is an application of web, and for library science, it is another step in continuing automation of libraries. Third confusion arises from the fact that there are many things on the internet that people are calling digital libraries, which from librarians' point of view are not example. Scientists and software developers collections of computer algorithms and software programs are digital libraries. साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट उनके कलेक्शन होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, एल्गोरिथम, वो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं. फॉर डाटाबेस वेंडर्स एंड देयर डाटाबेस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी सर्विस कंसिस्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज.
लार्ज कॉरपोरेशन हुआ डिजिटल लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब भी डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर आता है। सॉरी, फॉर पब्लिशर इट मे बी ऑनलाइन वर्जन ऑफ कैटलॉग। पब्लिशर के लिए ऑनलाइन पब्लिक कैटलॉग है। So what is working definition of digital library that makes sense to librarians? It may be mentioned here that the most scientific definition arising from the community of library practice is one of the set forth by the Digital Library Federation. Digital libraries are organizations that provide the resources including specialized staff to select the structure, offer, and the intellectual access to interpret, distribute, preserve, and integrity of ensure the persistence over the time of collection of digital work so that they are readily and economical available for the use by a defined community or set of communities, however the interest concerns both the communities। तो डिजिटल लाइब्रेरी आजकल हर जगह यूज़ होती है, चाहे वो इंटरप्रेटिंग करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, प्रेजर्व करना हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों में ये लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी यूज़ होती है। लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन आर रिफ्लेक्टेड इन ए broader two parts definition that arises from the research workshops on social aspect of digital libraries। कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन हो या कुछ और चीज़ें, उसमें भी डिजिटली लाइब्रेरी यूज़ होती हैं। चलो आज हमने डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा, अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।